वेलकम टू द विंस्प्रेनर चैनल। आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल है बिकॉज हमारे साथ आज है राहुल नार्वेकर, द बाउंस बैक किंग। राहुल की कहानी सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा बिकॉज राहुल एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है। ही इज बिल्ड स्टार्टअप जब तक आप में से बहुत सारे तो पैदा नहीं हुए थे या आपके मम्मी पापा ने आपके बारे में सोचा भी नहीं था, बिकॉज ही मेड हिज स्टार्टअप सिंस 1997। इन्होंने एशिया का सबसे पहला इंटरैक्टिव म्यूजिक चैनल बनाया, फर्स्ट लग्जरी फैशन पोर्टल बनाया, वो क्या था, फैशन fashionandYou.com, एंड है ना। उसके बाद 2009 से आई थिंक इन्होंने इंडिया कूचर इंडियंस को बेचा आउटसाइड ऑफ इंडिया, फिर एनडीटीवी के इंडियन रूट्स को फॉर्म किया। आजकल तो मतलब क्या बोलूं, इनकी वो ना, अगर लिंक्डइन पे देखते हैं तो हिज प्रोफाइल सेज 1 million ऑन अ मिशन टू क्रिएट 1 million entrepreneurs in India. And today we have with us the co-founder, CEO of India Network, Rahul Narvekar. It's such a pleasure to have you here, sir. Welcome. थैंक यू। आई बेट यू से दैट ऑन एवरी शो के आज का बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आज XYZ है, फिर ओ ABC है। नहीं सर, आज तो कुछ ओवर स्पेशल हो गया क्योंकि आपके पीछे, आपको पता है, आई हैव बीन आफ्टर यू सिंस कितनी बारी, हम लोग तीसरे अटेम्प्ट पे आज आप पकड़े गए हो। और कहाँ बैठे हो सर? ले में ले बैठे। बैठा हूँ। सर क्या ब्यूटीफुल सीन है तो पीछे। आई वाज इन अ रिट्रीट हियर, थोड़ा सा डिटॉक्स भेजा ये करने के लिए, उसके लिए आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड पीछे अगर जो दिख रहा है उससे तो पूरा डिटॉक्स, तो आई एम श्योर यू आर डूइंग दैट। सो Rahul ji, it's been it's such a pleasure to have you with us on the Winspreneur show. And आपको सबको व्यूअर्स को एक चीज बताऊं, मैं बड़े सारे इवेंट्स पे गया हूँ एंड इतना ट्रैवल किया है, बट पहली बारी मेरी आंखों से आंसू किसी बंदे ने निकाले ना, तो ये राहुल जी है। साला रुला दिया मेरे को। वो तब से इनके पीछे हूँ कि कभी मेरे उस पे भी आओ, and he's been very kind to come here, spend some time with us. So Rahul ji, everybody wants to know, what is the story of Rahul Narvekar? What's the journey been, sir? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज ओनली वन जी फ्रॉम द सिटी दैट आई कम फ्रॉम कॉल्ड बॉम्बे, मुंबई। वाह। इट्स कॉल्ड Parle-G। आई नो आई एम 50 साल का हो गया हूँ भाई, बट ये जी भी मत लगाओ। नहीं लगाऊंगा आपके बाद। I call myself Ganpati's favorite child. I've been blessed incredibly to be at the right place, right time. I've had angels appear in my life at the right time. Wow. So, as I love to say, I've had what is called an interesting journey. Uh, Started from the chawls of Mumbai. Uh, my father was one but of an orphanage, so he used to work for a factory. अपन लोग चौल में 10 by 10 square feet के कमरे में पैदा हुए। Till I was at my home, and then if I look back honestly, few turning points. One was I'm a 7 month baby. I'm a premature baby. तो 7वें महीने में पैदा हो गया था. And the chances of me surviving for the first 24 hours were very, very slim. Hmm. So Dr. Bhatia, who delivered me, used to call me Pahalwan because बहुत fight करके जिंदा रहा. Yeah. Second, whenever something technically bad has happened to me, something really awesome has come out of it. So because of low immunity, I was supposed to go to a school called St. Xavier's in Kanjurmarg, but I developed double pneumonia. अच्छा। So I was hospitalized for a few months. जब तक बाहर आया वो चांस चला गया. So I joined this brilliant school. जब लोग पूछते थे कौन से स्कूल जाते हो तो मैं बोलता था SPSJV. उसका फुल फॉर्म था सरदारनी प्रताप सिंह जनता विद्यालय. क्या जनता बात विद्यालय did है। not sound very cool, तो I used to say SPSJV. Very nice. छोटा स्कूल था. I was in class 1, school was in class 1. When I went to class 2, school was in class 1 and so forth. Huh. I was lucky because छोटा स्कूल था. I was the rock star in that school. Huh. And then one day, my dad's factory shut down. So from being the one of the better off, well-off families in the slum, we came down to becoming the poorest because my dad could never get formal employment ever. So obviously उसी स्कूल में टिका रहा. अच्छा। एंड देन किसी बात पे चौल के लड़कों से झगड़ा हो गया तो उन्होंने मेरे को ऑस्ट्रासाइज कर दिया, जाति से बाहर निकाल देते हैं, मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया. एंड बिकॉज नथिंग बेटर टू डू, लकीली देयर वाज अ रद्दी वाला अक्रॉस द रोड. उसके पास बहुत अच्छे
मैगजीन्स, कॉमिक्स, बुक्स ऐसे पढ़े रहते थे। हाँ हाँ, तो वहां से आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग। क्या एंड ऑफ बात कोर्स है। स्कूल छोटा था, बट बिकॉज आई वाज रीडिंग टाइम, फॉर्च्यून एंड ऑल दैट, एंड दिस इज Do, बिफोर do द you एज ऑफ do you गूगल। remember the first piece of magazine or book that you read? So कभी I याद है? picked up बहुत something पहले called की बात Time है। हाँ, magazine. अच्छा, टाइम हाँ, मैगजीन। टाइम मैगजीन, हाँ, टाइम मैगजीन था। एंड आई रिमेम्बर द article that fascinated me was this lady called Imelda Marcos of Philippines, अच्छा, her entire wealth and her journey. हाँ, And then the second was, for some strange reason, this whole uh, unipolar bipolar world, हम्म, uh, fight between US and Russia. And I'd read it up when I was 6 or 7 years old. हम्म, And funnily enough, when I was trying to get into entrepreneurship in 1992, in हम्म, the group discussion, this topic came up: हम्म, unipolar world versus bipolar. And I spoke well, and of course, I topped it. So for me, it's all I have collected a lot of dots, and going forward, sometimes वो काम आ जाते थे। सर तो वहां वही। से करके हाँ, first job in life, class 11, my mom said, I can't afford to send you to college. So you'll have हम्म, to get a job. And my हम्म, mom is Punjabi, so with a lot of jugaad, my mom got me my first job in life. It was as a ward boy in the night shift in a हम्म, hospital called Dhanvantri in Panch Rasta in Mulund. हम्म, So मैं रात को जाता था, सब बाथरूम वाथरूम साफ करता था, झाड़ू पोछा लगाता था, हम्म, एंड बैठ के पढ़ता था। हम्म, And that is the only job, Gaurav, that I didn't like or did not enjoy. Not because कि वो काम वैसा था, इसलिए कि उसमें मुझे कुछ ग्रोथ नहीं दिखता था। बिकॉज हम्म, मैं रात को बुक पढ़ रहा हूँ, नॉवेल पढ़ रहा हूँ, हैरोल्ड रॉबिन्स पढ़ रहा हूँ, एंड इन माई वर्चुअल वर्ल्ड आई एम इन द साउथ ऑफ फ्रांस, आई एम वेरिंग गुची, हम्म, प्राडा, प्राइवेट जेट, ब्लॉन्ड बेब, एंड साला रियलिटी में चल फड़का मार। तो वो हम्म। डिस्कनेक्ट था। सो वहां से आई जम्प्ड इनटू सेल्स, थिंकिंग सेल्स मेरा इज मेरा ग्रोथ। सबसे मुश्किल वर्ड जो मैंने स्कूल में सीखा था ना, वो यही था, वाइकेरियसली। एंड वो वाइकेरियसली अभी आपने जो बोला ना कि मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहता था, कहीं था और किसी की और की ज़िंदगी जीता था, वो वर्ड आज जुड़ा है। बड़ी देर बाद कोशिश कर रहा था कहाँ से यूज़ करूँ इस वर्ड को, आज यूज़ हो गया। बढ़िया सर, तो अच्छा सर, हाँ जी। डोर टू डोर सेल्स किया। हाँ, देन आई गॉट इनटू इंडियाज फर्स्ट फॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, हुँ, स्टार्टेड बाय द दाऊदी बोरा कम्युनिटी। वाह! So I was the poor kid जिसके पास फॉर्म के पैसे भी नहीं थे. So I हुँ, topped the written test, group discussion, and all that. And I told them, give me a scholarship. They were kind enough to give it to me. हुँ, But to cut a long story short, to pay for my hostel, I started working for a company called Teleshopping Network (TSN), which was formed by Ronnie Screwvala of UTV. अच्छा, हाँ, हाँ, तो मैं बहुत सुबह फेमस था। 10 से 4 तक पढ़ाई करता था। शाम को 6:30 से रात के 2:30 तक आई यूज्ड टू बी अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव टेकिंग कॉल्स। वॉव! And there I saw this guy who, so before this, my God was Dhirubhai Ambani. हुँ, मैं अपने छोटे से चॉल के रूम में सोते टाइम पे उनकी फोटो देखता था, और हाँ, सुबह उठते पहले उनकी फोटो देखता था कि हाँ यार, इस आदमी ने एटलीस्ट, तो ही धीरूभाई showed me that it is हुँ, possible to dream big even if you are not born in a business family. वेरी You know? नाइस। So हुँ, that till date, I think I'm sure he inspired millions of Indians at that time. हुँ, But वो था, but that meant factory. धंधा मतलब फैक्ट्री सेटअप करना. But हुँ, when I saw Ronnie Screwvala, I understood that a concept or an idea by itself, and Ronnie was building absolutely new age concepts with Teleshopping Network, UTV, United Music, United Movies, हुँ, 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 and he shattered my whole belief that businessman means suit boot pen and all. Shorts, t-shirt में. He was Ronnie. He was not sir to anybody. हुँ, And उस disconnect का नतीजा ये हुआ कि I used to start fighting in my uh, entrepreneurship course, हुँ, where it came to a point that despite being the topper of the batch, I was expelled. They threw me out हुँ, for being a troublemaker and asking too many questions. हुँ, उस टाइम पे तो वाट लग गई थी. हाँ, But then that is when I got full time into entrepreneurship, set up my first venture in the cable advertising space. Then me and a bunch of 5 other people, we got together and set up something called Channel Oxygen, which was Asia's first interactive music channel. क्या बात है। वो हमारा, आई डोंट नो, किस्मत अच्छी थी, राइट प्लेस राइट टाइम था. हुँ, We started making good money. हुँ। We became famous, at least world famous in Dadar, as we love to say. But one lesson is 3 year journey, 0, 3, 4 crores and zero, was that जब तक हम स्ट्रगल कर रहे थे, पुअर थे, तब तक वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ पार्टनर्स. द डे द हुँ, फेम केम एंड द मनी केम, वी स्टार्टेड फाइटिंग अमंग्स ईच अदर कि भैया तूने क्या किया, तेरा क्या होएगा. हजम नहीं कर पाए सक्सेस ऑनेस्टली. सो वाओ! वही 0, 3, 4 करोड़ 3 साल में, बैक टू जीरो, कंपनी स्प्लिट. एंड इन दिस लवली ट्रोमैटिक पीरियड, आई मेट माई वाइफ ऑनलाइन. हुँ, So as a prank, my partners had put up a profile on JioSathi.com.
And although I was not sitting with people, connected with this girl from South Delhi, Sub Division Enclave. Hmm. First thing to her was, no, I'm not looking to get married. But so I met my wife online, Hmm. and basically my partners had done a prank on me. They put up my profile on jeevansathi.com. And although I was not about to seriously look at getting married, so I connected with a lot of people. One of them was this girl from South Delhi, Sub Division Enclave, Pallavi Rao, teaching geography to students at a college, a school called St. Mary's in Sub Division, and aspiring to win RJ. पहले तो था कि कुछ नहीं बॉस, मैं तो शादी करना नहीं चाह रहा, but we connected. She flew down to Bombay to catch up with me. We met in Sundar Cafe in Matunga. अच्छा. Things clicked. I met her two lovely mamas, Appu Mama, Madhav Mama. And then my mother-in-law, Amma Girija Rao, sort of started telling me why I should not marry her daughter. मुझे लगा नहीं यार, कुछ बहुत ही नायाब हीरा है जो इतना डीसेल कर रही है अम्मा. तो वहां से, and then she said, you are परेशान here, बॉम्बे मुझे समझ नहीं आता. यूजुअल छोटे घर हैं, लोग भागते रहते हैं, तू तड़ाक है. So I did look at 1 year, and next year we moved back to Bombay. तो अपन बॉम्बे के सीधे साधे बंदे थे, अपने को आइडिया नहीं था कि दिल्ली वाले सारे सब ठग होते हैं. तो उसकी बात मान ली. I came to Delhi thinking it's for 1 year. It's been 23 years. I'm still stuck in the city. But if I look back, jam gaya. So we were honestly, I was almost 30. Pallavi was a year elder to me. ये जो आजकल बच्चे करते हैं ना, प्लान करके कि अगर मैच मेकिंग करना है तो पहले उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखो लड़के का, उसकी एजुकेशन देखो, ये देखो, सारे पॉइंट्स, उसके बाद यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप. ऑल नॉनसेंस. ठीक है. When I came to Delhi, I had $400 in my pocket. Pallavi had a broken down Maruti 800, and she was about to quit her job as a school teacher to try and freelance as a RJ. अच्छा. ठीक है. I got a job in Delhi. I got a Barsati in Arjun Nagar for 7,000 rupees rent. Okay. She used to stay in B7 South Division. हमने कुछ ये सब टेकिंग द पॉइंट, ये वो हमारा ये था. आई हैड अ कार व्हिच वाज ऑन इंस्टॉलमेंट्स एंड अ ड्राइवर कॉल्ड मिथिलेश शर्मा, जिसको मैंने बोला कि भाई तू कट ले, मैडम को मत पता, बट नौकरी चली गई है. क्यों, क्या बोलता पल्लवी राव का साला, तेरे से शादी की वाट लग गई. ठीक है. तो फॉर अ फ्यू डेज आई डिडंट इवन टेल हिम. मैं अपना शादी का सूट पहन के आई टू गो इनटू अ साइबर कैफे इन ग्रीन पार्क मार्केट एंड अप्लाई फॉर वेरियस जॉब्स. To give Mithilesh credit, he said, sir, आप educated आदमी, आपको आज नहीं तो कल मिलेगा. He worked without salary, Gaurav, for a few months, which is the reason, of course, he's still with me. Wow. And Pallavi Rao genuinely believes, as there's a lot of people in my family, that I take more emotional attachment from Mithilesh than I take from anybody else. But of course, that's the reason, right? तो उसमें फिर sheer desperation got a job with Ansals. मैंने ज्वाइन किया ये सोच के कि अंसल प्लाजा मिलेगा, सब डिवीजन के पास है, तो ज्यादा दूर नहीं है. They showed me Ansal Plaza, gave me a place called District Center Janakpuri. अच्छा. Again, things not going as per plan. Best thing, I learned my Delhi there. So if you ever go to District Center today, Janakpuri, there is an amphitheater there. अच्छा. जो मैंने अपने हाथों से बनाया. क्या बात. That's the only physical thing I've made in life. ठीक है. वो बनाया. Pallavi got a job as an RJ with Radio Mirchi. It was an upcoming channel. Wow. I did a blockbuster deal for my boss Pranav Ansal. So got a crazy promotion straight from senior manager to vice president marketing Ansal Plaza. अच्छा. Pallavi started doing the evening show Bumper to Bumper. So she became a celebrity. मतलब then I got into BTL, below the line activation, and also started making good money. And life couldn't be better. South Delhi में घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, chauffeur driven. Our son was born, much better. We used to be like बोलते थे the it Delhi couple. Like page 3 पे हफ्ते में 3-4 बार फोटो छप जाती. अच्छा. Turned out to be a autoimmune disorder called myasthenia gravis. First thought was Amitabh Bachchan because he's a famous patient of myasthenia. But then in Pallavi's case, he also had a rare form of cancer called thymoma. So during surgery, one vocal cord got cut, the other got paralyzed. She lost her voice. Head of ENT Apollo came and said, "Awaaz chali gayi hai. And if you ever have a normal voice ever, it will be considered a medical miracle." So yeah, arjing to bhul jao. But Pallavi Rao is like, she's wired differently, right? She's a भेजा पे कुछ wiring का लोचा है. So she asked for a pen and paper and she wrote, I will go back on air. Wow. Okay. Honestly, किसी ने विश्वास नहीं किया. But she was firm. We tried all the hospitals, Medanta से लेकर Sloan Kettering, सब जगह same opinion, not happening. And then this angel called Pawan, young Jat boy who says, I'm a yoga teacher, मुझे कुछ करने दो. He started working with Pallavi. And 2.5 years, she got the voice back, went back on air. Wow. Radio Mirchi went nuts. They spent about 3.5 crores on a full campaign saying, reincarnation of a radio jockey, Pallavi is back.
होर्डिंग्स लग गए सब जगह. द बिगेस्ट होर्डिंग वाज ऑन अंसल प्लाजा. बट Wow. एक फनी चीज ये हुई थी गौरव इस पीरियड में कि Mm, जैसे ही आई क्विट माय जॉब टू बी विद हर उस फेज में, एंड शी mm, वाज नो लॉन्गर आरजे पल्लवी, तो ये जो पूरा नेटवर्क था ना हमारा, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये एवापोरेट हो गया पूरा का पूरा ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट वन और टू फोक्स. नोबडी, पीपल स्टॉप टेकिंग कॉल्स, mm, सब कुछ बोलते थे. टाइम खराब आता है तो पहले तो अजीब लगा, बट देन उस mm, टाइम पे वी वर सो फोकस्ड ऑन द मेडिकल, वी सॉर्ट ऑफ zoned out everything. One mm, good thing, because of my habit of reading and the circle of friends I have, is I just blocked out, I just disconnected with people who were transactional, who were negative, who were trying to put us down. I just blocked them out, including family. mm, ऐसे मेरे को घर में कोई नहीं चाहिए जो ये क्या हो गया, हाय तो नहीं मचाना है. mm, Luckily, we are blessed. Our two helps, Manjana, Mariam, Randa at that time, Mitlesh, my chauffeur. All of them were like, anything happening, it's normal. mm, So positivity, good nutrition, good ye circle. 2.5 liters, this medical miracle happened because of that, not allopathy. mm, Pallavi went back on air. I was with a company called DLF. Horribly bored. 2009 में I quit my job to set up something called fashionandnew.com. mm, The most intense period of my life. तो जब तक DLF में था, I was again somebody. I was the boss. I was Rahul. DLF करके number सेट था. mm. And then when I quit my job to do Fashion and You, I thought it will be easy. I realized I'm not nobody, because co-founder Fashion and You उस टाइम पे मार्केट में रूमर ये थी गौरव कि DLF ने इसको नौकरी से निकाल दिया है, Mm. तो काम धंधा तो है नहीं, तो घर पे बैठ के तो बहुत सहानुभूति मिलती थी पल्लवी को, और whatever, ठीक है. And this whole world changed when we became the second startup to raise $8 million from Sequoia, then 40 million, then Wow. 128 million, and then so on and so forth. But the peak of this, Pallavi had a relapse, 5 tumors behind the lungs. So back to Apollo, surgery, radiation, chemotherapy, she lost her hair, another round of chemo, Mm, फिर गायब हो गए. वापस when I came back, world had moved on. In 2013, I partnered with NDTV to set up something called IndianRoots.com. mm, NDT wanted to do valuation, but we didn't have the money. And as it happens again in life, our business plan was $3 million cash funding. 18 crore cash चाहिए था, बाकी we'll manage. mm. And as luck would have it, the funding fell through at the last minute. And all I could raise was a total of 84 lakhs. So 18 again, करोड़ का best thing 84 that lakhs. हाँ. best thing that could have happened to me, because we threw the rule book out between me and Anish Nair, my co-founder. We Mm. were like the perfect team. I was a mad, crazy bundle of energy, and Anish is this calming influence. ठीक है, सब ठीक है, साले पैसे कहाँ से बनेंगे? So good balance, and then we had this bunch of incredible people, in my opinion, who rewrote the rules of e-commerce. So from Tanvi to Shilpi to Sheena to Niharika, all of them. I mean, these guys we just created history. We became the first startup to sell a shawl worth 19 lakhs online with a credit card. Wow. Then we became valued after 3 years. It became an $85 million company. And the day we became an $85 million company, my world changed, because Dr. Pranay Roy in an interview said, you know what? I don't understand today's world. I spent 27 years of my life building a group called NDTV, which is valued at $90 million. And I have this tiny little venture जिसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें कोई न्यूज नहीं है, कोई टीवी नहीं है, कुछ नहीं, इसमें हम साड़ियां बेचते हैं. And today, and with only an 84 lakh rupees investment, today it is valued at $85 million. So Wow. spotlight aa gayi, all that. But then again, 2016 I exited, because parallelly मेरे ये सब journey के साथ Pallavi had 8 major surgeries. मतलब हमारा every winter would be Apollo. She was a champion for what is called ventilator. तो वेंटिलेटर में ऐसी टाइम पास में जाती रहती थी. बट उसकी वायरिंग अगेन ऐसे ना, उसकी वायरिंग अलग है. So 2014, day, I was sitting in a board meeting, and after the board meeting, Doc Pranay Roy turned to me and said, Rahul, what can we do for you? क्या करोगे? He said, like, no, you're an NDTV CEO. What can we do for you? So I said, why don't you get me the best medical opinion on Pallavi's condition? Because unfortunately, with all due respect, when you go to a typical hospital, they see us and they see a typical solution, which is पैसा. So this very sweet doctor called Dr. Nazli was on the NDTV board, and she sort of found me this doctor called Dr. Sultan Pradhan in South Bombay. So he had retired, but he was doing charity at this hospital called Prince Ali Khan Hospital in Mazgaon. So she got me an appointment with him, which was very tough. I flew down, I showed him all the reports. He looked at the reports, he looked at me, and said, Rahul, the only thing I'll say is, let her spend as much time as she can with your son, because she's got limited time. I said, okay, doc, that's okay. What's the hack?
He said, no, there is no hack. The cancer is spread through the body. She's got a couple of months to live at best. I said, हाँ, but कुछ तो होगा. He's like, राहुल कुछ नहीं है. I said, डॉक मेरा ना वायरिंग खराब है. मेरे को ना नहीं समझ आता किसी चीज से. कुछ तो होगा. He said, नहीं है. I kept arguing. Finally, they threw me out. I was furious at him. Okay, I came out and I think I remember I called and I yelled at Dr. Nazreen, sweet lady. She's like, you just come over. So I flew to Gurgaon, went to her house, and she said, this guy has no skin in the game. He's a genuine person. So accept whatever he's saying. And I said, Dr. Nazreen, मेरे को ये acceptance समझ नहीं आता. But again, we were very blessed to find this angel called Luke Cautino who came on life. Thanks to my friend Vishal Goki. So Luke started working with Pallavi, nutrition, some micronutrients, certain positivity. And that this was in 2014. And Pallavi went on to live. I mean, physically, I lost her on 18th of May, 2021. It will be almost 2 years now. But she had a great life. So she did, I think, 3 or 4 TEDx talks. But the one incident I want to mention here is at one point, uska surgery ke time pe Gaurav, diaphragm damage ho gaya and it shifted up. So she couldn't do those. ऐसे नहीं कर पाती थी. तो लेटना तो possible ही नहीं था. So for almost 1 year, she used to just sit and sleep. And then because the body was taking so much carbon dioxide, वो ऐसे खड़े खड़े गिर जाती थी कहीं भी धड़म से. तो मेरे पूरे घर में ऐसे बड़े बड़े pillows रखे होते थे. And my instructions to my staff and everybody was, दीदी गिरेगी, तुमको लग रहा है मर रही है, your reaction, हाँ दीदी क्या हुआ, बिठा दो. It's all normal. But then one day she had a myasthenic crisis, rushed to Apollo on the ventilator. And Dr. Suri, the neurologist, fabulous doctor, came and said, Rahul, colostomy करेंगे, यहाँ पे एक hole करेंगे, ये vendor है, इससे आप एक ventilator ले लो. And what's the hack? There is no hack. सब OP ले लिया, सब कुछ try कर लिया, nothing. I said, Doc, can we wait for 4 days? He said, क्यों? I said, it's her birthday coming up, 17th October. I want to celebrate her birthday, probably her last, and I also want to launch a book. He said, कौन सी book? So what had happened is 1 year prior to this, Pallavi was again on the ventilator. Her entire body was paralyzed. Except her right thumb. And to keep her mind, she was in something called a stroke ICU. So everybody except her is in coma. Yeah, so you missed out about 4 pneumonias and 1 myasthenia crisis. So it was a myasthenia crisis. I was in the ICU. I was unable to talk, eat, swallow, breathe. My fingers were not working. Luckily, my thumb was working. And I was mighty bored in the stroke ICU where all the other patients were in coma. So it was pretty boring there. So I took special permission from the doctor. And I said, can I have the mobile phone? I will not see Facebook. I'll not be on WhatsApp. But I want to listen to music. They agreed, and I cheated. So out of sheer time pass, I was noticing the beds around me. And of course, it is depressing. It is scary. And there was this night when a new patient came in, shouting, Kamla ko bula do, Kamla ko bula do. So I said, okay, some time passed for me. And I noticed the story unfolding. And I started WhatsApping my husband, Rahul, who was on permanent duty downstairs. And that WhatsApp note turned into a short story, which I completed by the next morning. I noticed such wonderful, wonderful stories between the doctor and the patient. The family is coming in, as Luke said, about love. Love is all around, especially in the ICU. And of course, I wrote about 6 stories. And Rahul perpetually would send them on Facebook and WhatsApp and whatever. When I came back home, he said, 3-4 और लिख, 10 stories लिख, उसकी किताब बनाते हैं, launch करते हैं अगले साल अपोलो में. I said, हाँ, Dr. Reddy is waiting there for the launch. But then as I say, you never know what happens. Be very careful of what you say. The next year, I was there in the same ICU, on the same bed, with a type 2 lung failure. And the doctor's almost saying, tata, bye-bye. And Rahul asked for 4 more days from the doctor because I was supposed to get a tracheostomy done. Doctor said I wouldn't be able to breathe on my own, ever. I got scared. Of course, Rahul did not tell me initially. He asked for 4 days so that I could celebrate my birthday in the ICU.
And within those 4 days, the unedited, horribly grammatical error-filled book was published by him, and he got that with my son into the ICU, same bed, and we launched it there. It's called ICU Love So I was in Story. coma. So to keep her mind occupied, because she was there for days and days, हमने उसको एक phone दिया था यहाँ पे, and she could operate it with her thumb, right thumb. And we told her, सिर्फ गाने वाने सुन जो भी whatever, just keep your mind busy. And I was running my startup from the cafe coffee day नीचे. And for a very brief moment, we got into this discussion on why me. मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि God is doing this to me. I said, Pallavi Rao, you should say thank you to Ganpati. You were a school teacher. The amount of money we have spent on medical expenses, we should have been logically outside the footpath on AIMS. You are in the best hospital of the city. You have help at home. Our son is absolutely fine. ठीक है, अभी पंगा है, solve हो जाएगा. He's like, साले तू तो नीचे कॉफी पी रहा है, मैं यहाँ टंगी हूँ. I said, look around and find something positive. You're an artist. Or next day morning, I wake up, there's a message from her, and she had written a love story with one thumb. Wow. I sent her back 2 words, Orle. She sent me back 1 word, Kavine. But she ended up writing 7 love stories on that. I had published it as a book called ICU Love Stories. So I wanted to surprise her. We went into the ICU with special permission for 5 minutes. We launched the book, we cut a cake. And I don't know what it triggered. The same Dr. Chawla comes and says, kuch to miracle hua. No need for tracheostomy. But by PEP support, she can't get out of the room. This was 2015. Wow. 2015 to 2021. She did all her TEDx talks. She led an active life, working. She had her own podcast called Can Inspire. So if I look back, whatever you said, ye sab startup, ye sab to theek hai yaar. That's many people have done. If I look at the whole summary of my life, I've been blessed to spend 23 incredible years physically with Pallavi Rao. My world collapsed on the day she physically left. Abhi to baitha hu aaram se, but us time pe to waat lagi thi. Abhi bhi I'm here to sort of cope with a lot of stuff in my head. I've been in sort of a hibernation for last 2 years. On and off bahar aata hu, and then one fine day, I don't know, she came in my dream and gave me one kaan ke niche and said, "Sale, ऊपर गई हूँ, तेरे life से नहीं गई हूँ." And of course, my son is my biggest support, Rian. And in fact, if I look back, that's another incredible thing in my life. So Rian used to go to this school called Mirambika, a brilliant school in South Delhi, like an ashram kind of a living. No formal education. Only 18 children, no books, no syllabus. And koi structured education nahi, right? Rian was 10 years old, 2015 again. And came home one day and said, Papa, I've been selected to go to this football camp in Barcelona. ₹2.25 lakh check. And I see, मैं कोई मूड में था. I just said, Rian, इतने पैसे नहीं है तेरे बाप के पास, 10,000 रुपए दूंगा, बाकी खुद कमा लो. Like, मैं तो बच्चा हूँ, ऐसे तो किसकी प्रॉब्लम है? I meant it as a joke. He took it seriously. With his 2 best friends, Ziki and Kaustubh, he set up a stall in Oscar's Market to sell tang and some half-burnt cookies. कुछ 400-500 रुपए कमाए, घर पे आके पल्लवी को दिया कि tell पापा मैं कमा लूंगा. Pallavi Rao took them into the kitchen and said, ये जो डो यूज किया ना कुकी के लिए, ये 900 रुपए का. He's like, हैं? It means you made a loss. We had no clue what a loss is. रात को टेंशन में मेरे लिए वेट करता रहा. I came, I explained to him the concept of a margin. He looked around the house. He said, मैं पेंटिंग बना रहा हूँ. He made one painting and put it on Facebook. And my friend Vishal Gundal immediately called and said, क्या लफड़ा ये? I said, बात कर इससे. So he spoke to Rian. Rian explained the whole story. जालिम बाप पैसे नहीं दे रहा and all that. So Vishal said, आपको कितने पैसे चाहिए? This time he smartly said, uncle आप कितना दोगे? He said, 10,000 रुपए ले ले. He said, done. And then this other sweet girl called Sahiba Sethi from Hello Meets, she called up Rian and she said, you know what, why don't you do a crowdfunding campaign? So under Sahiba's guidance, he put up his whole campaign on a site called BitGiving. And then Bhavik Zaveri, our friend, built a site for Rian. And people just chipped in. They just want to help. So Rian ended up making 2.5 lakhs by selling his paintings online. Wow. That became a Yahoo story. Okay. So I'm saying that if I look back, yes, but the life ऐसी सब interesting चीजें हुई है. Okay. He has his own startup from the age of 14, selling all these high-end sneakers जो मेरे को समझ नहीं आते. But he's sorted that way. Abhi, for both of us, this is a journey of sort of healing from the last 2 years, trying to figure out what next. And उसमें ये I had gone to this program at Harvard called OPM, Owner President Management Program, which is a brilliant course for senior citizens like us, where I sort of discovered this mission to, and I've been traveling across small town India for the last 15, 16 years. So I have this insight that there's a lot of good talent in small towns. What they generally have a challenge is some kind of a mentoring, some sort of a giving them some hope that you're on the right path. Okay? Unfortunately, for a lot of small towns, the negative energy is more than the positive energy. तो कोई आदमी कुछ करने की देखते हैं तो उसकी बजाने में ज्यादा लोग घुस जाते हैं rather than supporting them. All of that, right? So our idea is to sort of figure out people who really genuinely want to do something good in life and be a support system. And of course, it's not charity, it's not an NGO, it's a business model. So it's an incubation acceleration thing that we're looking to do. That's the whole. ये जो इंडिया नेटवर्क में आप कर रहे हैं, है ना? Wonderful, यार. Rahul,
फिर सॉरी कहना पड़ेगा, आज भी मेरे आंसू निकल ही गए। नहीं, अब क्या करें, आपकी स्टोरी में इतनी जान है। आई मीन आई पता नहीं कितने पॉइंट्स पे आंसू इसलिए निकलते हैं कि आई रिलेट, कितने पॉइंट्स पे आई रिलेट, यू कैन नॉट इमेजिन। बट इट्स नॉट माय स्टोरी। बट राहुल, ये ऐसी जर्नी रही है, ऐसी लाइक whenever I've met you, and we bumped into each other 5, 6, 7 times probably. कभी हम दिल्ली में मिल जाते हैं, कभी हम चंडीगढ़ में, कभी लुधियाना में आपके साथ बियर पीने में पहुंच जाता हूँ। पर यू नो चीले पे चर्चा करने पर। हाँ, चीले पे चर्चा। पर द होल थिंग इज कि ये राहुल की लाइफ में, मैं और जब भी मैं आपसे मिला हूँ, you've exuded positivity. And whilst I say that, you are all positive, उसके पीछे जो है ना, वो इतनी सारी स्ट्रगल है, इतना सारा वो है। How do you kind of, are you wearing some sort of a veil जिसको छुपा के बैठे हो, या कैसे ये शक्ति देखो कहाँ से बॉस, आ रही है? I'll tell you. देखो, ऐसा नहीं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन राइट नाउ। मैं यहाँ क्यों आया लेना, जब मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है तो आई डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड आई गो इनटू माय शेल एंड आई डील विद इट माई सेल्फ। मैं रिबूट हो जाता हूँ, देन आई कम आउट। एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर, मतलब वो पागल हो जाते हैं। इफ यू लुक एट माय फ्रेंड रितिका सिंह, जिसका आज बर्थडे है, वो बेचारी पक जाते हैं, साले सडनली यू गो ऑफ, स्विच ऑफ, फिर प्रकट हो जाते हो, क्या सीन है? मैंने कहा यार, दिस इज हु आई एम, नो, डील विद इट। तो पॉइंट इज बॉस के देखो, यू व्हाट, मेरा मेरा जो लर्निंग है लाइफ का द्वारा, यू कैन नॉट चेंज व्हाट लाइफ गिव्स यू। अच्छा बोलो, बुरा बोलो, जो करो, ठीक है, you cannot change that. You cannot change what happens to you. The only thing on which you have some control is your reaction to it. So by choice, our reaction, mine, Pallavi's, our reaction has always been, ठीक है बस, वाट लगी है ना, अपन क्या कर सकते? The first thing you have to do is smile. Second, what I learned, and this is a whole, ये जो 16-17 साल की हमारी जर्नी रही है मेरी और पल्लवी की, फिर उससे पहले तो बहुत अच्छा था। उसमें एक चीज हमने कुछ ना छोटे छोटे रिचुअल्स बना लिए थे विद ईच अदर, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप। सो इन माय Get up, केस, dress up, show up. क्या बात? ठीक है, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल, आई वेंट, आई रियलाइज शी इज लेफ्ट, आई वाज, मतलब आई डोंट इवन, आई मीन, मुझे तो सॉर्ट ऑफ ब्लैंक आउट है वो उसके बाद के दिन। बट आई डू डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट ऑटो मोड में आई केम बैक, आई वाज स्टेइंग इन अ होटल बिकॉज अम्मा वाज एट होम, माय मदर इन लॉ, माय सन, तो वो कोविड का सिचुएशन था, तो आई डिडंट वांट टू, सो आई वाज इन अ होटल एंड सॉर्ट ऑफ इन अ whatever auto made में I went back, I showered, I shaved, I put on a nice crisp white shirt because she loved to see me in white and मैं हमेशा ब्लैक पहनता था। she कैसे नहीं, पल्लवी राव के सामने जाना है तो हंसते हुए एंड व्हाटएवर, ठीक है। तो ये चीजें जिंदगी ने सिखाई, या तो हमने खुद सीख ली, या तो जो किताबें पढ़ी थी उससे हो गया, या द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स we have had around us, incredible people, okay. तो आई थिंक इफ यू आर इन द राइट, जो संगत का असर, and if I look at what I now love to say, my formula for anything in life is 3 words: content, context, community. Anything and everything you do is content. ये अपन ये जो कर रहे हैं content है। When I meet you for the first time, I'm not meeting Gaurav, I'm meeting Gaurav's story, right? That's your content. You are not meeting Rahul, you're meeting Rahul's content. But content by itself is nothing. Content in a certain context is what gives its meaning, right? So same content in one context can be positive, in another context can be negative. So some people will love you, some people will not love you, okay, in a particular phase of time. हर किसी का अपना filter लगा हुआ है. But if you're in the right community, the community is what gives you context to deal with any kind of content, whether it's your own script in your head. So most of us have our own story about who we are. And if we are able to make an incremental change in that script in our head, na, really phenomenal things are possible. So if I look at Pallavi Gaurav,
her script could have been I'm a victim, but her script was I'm not a victim. Okay, ये हो रहा है, but we will only do what we. So I remember I'd done a Zoom with Pallavi during COVID from Bombay, and I was there. Dilshad, my friend, was there. Sonia was anchoring it, and for a very brief period, uh, Pallavi said this, and I didn't know this. कि जब उसको डॉक्टर ने आके बताया कि ये हालत है, you have myasthenia gravis and a rare form of cancer, thymoma, and she was मतलब जिटरी कि मैं राहुल को कैसे बताऊंगी, ठीक है, कि क्या होगा, कैसे होगा. She was when I walked into the hospital room, she is trying to build all sorts of भूमिका कि कैसे बताना है, क्या करूं. And finally she said ये हुआ है, and my immediate reaction was ठीक है, अपने को क्या करना है. And she said to Sonia, you know what, weight lifted off my shoulder कि हाँ यार, अपन क्या कर सकते हैं, अपने को next क्या करना है, वही है. That has become our mantra for any crisis, anything. डॉक्टर से ये हो रहा है, ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं. And that is where your community matters a lot. If you're in the right community, you will absorb that energy. And if you look back, life is all about basics. जो पुराने लोग बोलते थे ना, खरबूजे को देख के रंग बदलता है, संगत का असर, this that. So basics अगर ठीक रहेगा, तो सब सही बेसिक्स में आप ही की बात में एंड कम्युनिटी को ही लेके यू सेड कि यार जब मेरे अच्छे दिन थे तो मैं पेज 3 दुनिया हजारों लोग आसपास मंडराते बोल रहा हूँ क्योंकि यू नो दैट वुड बी द वर्ड यू नो एंड जब मेरे पास नहीं था, जब हम लोग नहीं थे उस सेम पोजीशन पे, एवरीबॉडी डिसअपीयर्ड. I have also, faced something similar. And how does, so what you're saying about community is कि जो थे वो ऐसे solid थे कि बाकियों के लाखों के बराबर थे. Is this what you're saying? Absolutely. So I'll tell you, but again देखो इसमें ना, you can't, मतलब इसको कोई एक्सेल शीट पे नहीं डाल सकते आप फॉर्मूला बना के, ठीक है. So I remember this thing the first time when पल्लवी की सर्जरी होनी थी, ठीक है. I had no money, okay. And I remember मेरे को डॉक्टर सूर्य ने बोला कि कल सुबह करना पड़ेगा ऑपरेशन, एंड आप पैसों का जुगाड़ कर लो, ठीक है. एंड दिस वाज लैक्स ऑफ रुपीस, तो 2-2.5 लाख तो मिनिमम चाहिए था. दिस इज वे बैक 2005 और 6. एंड रिमेंबर मैं लाइफ में सेकंड टाइम रोया था उस टाइम पे, फट गई कि बॉस पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे अकाउंट में 4,000 रुपए थे. एंड अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ कलीग एट दैट पॉइंट, एलिजाबेथ सैमुअल, शी हैड, उसकी गाड़ी में आया था मैं अपोलो. सो मैं आया बाहर, मैंने सेड क्या हुआ, एक्सप्लेन टू, ऐसे यार समझ नहीं आ रहा है, ठीक है. उसने मेरे को घर ड्रॉप किया, चली गई. 4-5 बजे शी कम्स होम विद अनदर फ्रेंड, एंड दैट लेडी वाज नॉट अ फ्रेंड एट दैट टाइम, संगीतिका निगम, ओके. So Sangeetika I had only met once before with Elizabeth. They both walk into my house. Elizabeth gives me 30,000 rupees cash. She said, ये ना कहीं से मैं लेके आई हूँ, इंटरेस्ट पे है, बाद में फिगर आउट करेंगे कैसे चुकाना है. एंड Sangeetika gave me a check of 50,000 rupees. She said, राहुल मेरी 1 लाख की FD है, मैंने तुड़वा दी है, ये 50,000 है, और तो 50 भी ले लेना, टेंशन मत ले. Suddenly I had 1.3 lakhs plus my 4,000 rupees. These are two people. एलिजाबेथ भी तब नई दोस्त बनी थी. शी वाज नॉट कि मेरे को बहुत सालों से जानती है. Wow. बट द पीपल आई वाज बैंकिंग ऑन विच मी. तो ये लाइफ में ये पैटर्न बहुत बार रहा है, ठीक है. तो एज सेड ना, हमारे केस में वी आर वेरी लकी कि मतलब मैं लुक को जानता नहीं था यार, मैं विशाल बंदल को भी नहीं जानता था, कहीं से ही अपीयर्ड इन माय लाइफ. अगेन अ वेरी सेल्फलेस पर्सन, मतलब मैं पहली बार ही 100 किलोमीटर ट्रेल वॉक पे आ गया, मैं चला गया, मेरी वाट लग गई, वापसी में अपनी गाड़ी में डाला, अपने घर ले गया, सुबह उठा के मेरे को, दैट ही इज द गाय हु गॉट मी हुक्ड ऑन टू एस्प्रेसो, बिकॉज़ नेस्प्रेसो की मशीन पहली बार उसके घर में देखी थी मैंने, ठीक है. एंड देन ही कनेक्टेड मी टू लूक, who helped us. लोग होते हैं, ठीक है. And there is nothing now when I look back, when you say people disappeared, they appeared for a certain reason, they disappeared for a certain reason. उसमें कुछ सही गलत नहीं है. आज if I look back at my entire circle, मैं आपको क्या बोलूंगा, हाँ मैं और अनुराग कश्यप एक टाइम पे स्क्रिप्ट लिखते थे साथ में. बाकी भी बहुत लोग थे मेरी लाइफ में, मैं अनुराग का नाम क्यों लेता हूँ क्योंकि फेमस है वो, ठीक है. सिमिलरली a lot of people come to you attracted, जो आज अगर आप ताइक्वान जाओगे, लोग अमन गुप्ता के साथ सेल्फीज लेते हैं, ठीक है. एक टाइम था जब मी एंड पर्ल, माय को-फाउंडर एट फैशन इंडिया, वी यूज्ड टू वॉक इनटू अ टाई इवेंट एंड द रूम वुड पार्ट, एंड अ फ्यू इयर्स लेटर कोई नहीं जानता था. तो all of this is very temporary, you know. You think fame is permanent, it is not. You think wealth is permanent, it is not. Okay.
Also, there is a term called hedonistic adaptation. Hmm. ठीक है. So I was till 2016 I used to only chase wealth all the time. ठीक है. तो मैं अपने 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के चौल के कमरे से जब बड़े घर में गया तो मुझे लगा वाओ 2 दिन तो बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. फिर वो नॉर्मल हो गया. Then when we came to Delhi, we kept getting into bigger house, वो भी बड़ा. So you adapt to your circumstances, right? After a while, you want something bigger and better. Similarly, जब I wanted to be famous, I was chasing this, right? Fame, fame, fame. Till came a point where I realized it's transactional. In fact, fame is now more of a challenge than उससे कोई फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा है. Okay, but you have to become famous to realize that. So जो आपने लास्ट जो हमने CIA में इवेंट किया था, this guy came to me and said, sir, you know, आप बोलते हो ये सब ठीक है, बट एक बात है, जो आदमी साला पैसा कमाता है वही बोलता है पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं. मेरे को पूछो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन देखो, यू हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी. ये किसी और के मुंह से किससे सुन के कुछ नहीं होता. ओके, तो वंडरफुल वंडरफुल. इतना मेरे को तो मजा आ रहा है ना सुन के. आप जहाँ बैठे हो ना, अभी आपको नहीं पता है, पीछे से जब हमने शुरू किया था पूरे बादल थे, पहाड़ दिख नहीं रहे थे, अभी पहाड़ दिखने लग गए आपके पीछे. लाइक यू नो इट्स वो दैट्स द बादल ब्यूटी ऑफ खेल रहे. माउंटेन्स. माउंटेन्स आर हीलिंग. इट्स सीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो राहुल, लाइक यू नो, अभी आपको अगर लेट्स से मैं को राहुल थोड़ा सा ना, थोड़ा निचोड़ निकालो इतनी जर्नी, एक इतने यू नो you've bounced back from everything that came to you and you said, अभी आपने ही बोला कि यार यही अच्छा था. जब मुझे मुश्किल आती है, जितनी मुश्किल आई वो बेटर था मेरे लिए. you said this, right? You said something like कि यार इसी में बेहतरी थी, या this was the best thing that could have happened to me. That means adversity is what made you that bounce back king we talk about, right? And so from the bounce back king, there lots of youngsters out there, or I don't have to say youngsters, there's a lot of people out there who struggle with a few things. So अगर राहुल को निचोड़ निकाल के उनको कहना होगा बॉस ये ले, ये मेरे गुरु मंत्र हैं, तो वो राहुल कुछ दे जो आज, लाइक यू नो कुछ ले में बैठे हो, कुछ बांट दो आज. ओह, वो भी खुश देखो, हो as I said, गया. what works for me does not necessarily will work for you. Okay? Fair enough. Everybody has their own anything. Fair But enough. if I look back, typically my mantra is be besharam. And when I say besharam, I don't mean it in a negative way. What I mean is that stop giving an F about what anybody else thinks about. Because a lot of us, if we look back at our life, there were several moments where we wish we had taken that step, but हम hesitate कर गए कि लोग क्या कहेंगे. And especially the stigma of being a failure. So my friends Isha and Sahil Vora, Chile wale, ठीक है, Naturic. So Isha was speaking about it in our event Chile पे चर्चा, right? That when Sahil was the big daddy at ITC, they had a lot of respect in their colony. Okay. हाँ, मैं वही था. I remember that. हाँ. ठीक है. So be besharam, and when I say be besharam, I mean it in a positive way. That stop giving an F about what anybody else thinks about you. Do more things. If all of us look back at our journeys in life, there might be several moments जहाँ पे हमको ऐसा लगा होगा कि हाँ यार उस टाइम पे वो स्टेप ले लेना चाहिए था. But because of this whole fear of failure, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे. And second is surround yourself and be very ruthless in cutting out negative people who say तुमसे नहीं हो पाएगा. Okay. Surround yourself with people who say हाँ boss तुमसे हो पाएगा, because the only thing that matters is energy. And I've seen enough people who have persisted and just zoned out all the negativity around. So if you look at say Prasanna Rao of NRI helpline, तो भाई लगा हुआ है 1.5 साल से यार, तो फोड़ देगा आज नहीं तो कल फोड़ देगा वो. You look at साहिल ईशा वोरा, I mean इस एज में ITC की अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ईशा with 2 kids, okay, they've taken a leap of faith. वर्स्ट केस ठीक है, कुछ नहीं होगा, कर लेंगे. वो जितना आप करोगे, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एनीबॉडी, यार आज की डेट में सोशल मीडिया ऐसी चीज है ना, आप सुबह उठते ही फोन ऑन करते हो, पूरी दुनिया को देखते हो, आपको वैसे फोन हो जाता है कि यार सब लोग कुछ ना कुछ उखाड़ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. सो द अदर टिप इज योर हैबिट्स डिफाइन यू. सो व्हेन यू वेक अप फॉर द फर्स्ट 1 hour, don't look at your phone. When you're about to go to sleep, because when you write something, there is a connection between brain and whatever you. And if you're grappling with a problem in your life, and faith, we underrate it. आजकल के बच्चे थोड़ा, हमारे एज में भी जब ये doesn't matter कौन से faith का, वहां जाके बैठ जाओ, कुछ तो अच्छा मिलेगा सुनने को, सीखने को.
इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। बढ़िया है। So guys, I know I must apologize for the distortion that we are getting in the middle. मुझे पता है आई थिंक like वेदर हैज चेंज आल्सो इन ले, सो अभी हाँ, कनेक्टिविटी इशू भी हो जाएगा। थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है, उसके लिए भाई माफी, ठीक है। बट वो जितने भी बिट्स अभी गिरे हैं ना राहुल के मुंह से, अभी देखो जीव हटा दिया मैंने, ठीक है। वो जितने भी बिट्स गिरे हैं ना वो सुपर गोल्डन नगेट्स हैं। वो तो मतलब वो फेंक रहे हैं, अभी उन्होंने कहा इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। ठीक है ना। सो क्या जर्नी है इस बाउंस बैक किंग की यार। राहुल मजा आ गया। मतलब ना मैं जब राहुल के साथ बैठ के 2 मिनट बात कर लो ना, राहुल चाहे ले में अपना डिटॉक्स करने गया है, साला दूसरे के अंदर लंग्स को ना उसने फिल कर दिया है। वो ऐसे मेरी छाती तो ना अभी ऐसे आ रही है कि एक वेंचर तो आज ही स्टार्ट करूंगा साला। मतलब ऐसा पंप अप हो जाता है ना इंसान के। एंड आई होप कि किसी को भी जिसने भी ये देखा, आई नो वी आर अ स्मॉल चैनल, बट जिसने भी देखा, just look at this wonderful person and just be inspired by this, the story that he has. The bounce back king ने जो किया है वो ये है कि यार बस लाइफ को ना, वो जैसे कहते हैं ना, वो जो बोला आपने कि भैया गेट अप ड्रेस अप शो अप, यही कहा था आपने कि बस शो अप। वो जस्ट शो अप की लाइफ है। थोड़ा सा बेशर्म हो जाओ, थोड़ा सा थोड़ा सा वो नेगेटिव लोगों को बाहर निकालो अपनी लाइफ से, एंड थोड़ा फेथ रखो। क्या बात है राहुल जी, मजा आ गया। आई विश यू ग्रेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। आई विश यू सच इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। आई विश कि मतलब आपकी जो है ना, आप बूटे बोते रहो, आपके वो 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स 100% बनेंगे। एंड मैं आपके साथ जुड़ूंगा कि मैं भी जितने आपकी हेल्प कर सकता हूँ उसमें आपके साथ जुड़ूंगा। एंड आई विश यू ग्रेट सक्सेस, इंडिया नेटवर्क के लिए ग्रेट सक्सेस। एंड गाइस, एनीबडी आउट देयर, गो चेक आउट राहुल नावेरकर एंड गो चेक आउट इंडिया नेटवर्क। ये है जो डिफरेंस बना रहे हैं, ये है जो घुस घुस के, मैं तो लिटरली कह रहा हूँ, घुस घुस के आपकी मदद कर रहे हैं। Go reach out to him. What a lovely gentleman. Thank you so much, Rahul, for being on this small थैंक यू, channel called the Winspreneur Show. मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक